Good evening, everyone. Very good evening. Who do we have over here? Good evening, Ustad. Good evening, Ashutosh. Good evening, Ayush. Good evening, Monica. Very good evening. Okay, so good evening to everyone. How is everyone? I hope everyone is like nice and well. And I think all of you are good. So, how are you, everyone? And have you started your preparations for the Sainik School entrance exam? Good evening. Very good evening, everyone. Okay. Good evening, very good evening. Okay, everyone. So today onwards, all of you from a very long time were requesting that live sessions हमको continue करना है, and more importantly, more specifically with the GK for the Sainik School entrance exam हमको start करना था. So good evening, everyone. Today onwards, we are starting with the GK live sessions. डेली आपके 8:15 PM पे इवनिंग में सेशंस रहा करेंगे, हाफ एन आवर 45 मिनट्स के सेशंस रहा करेंगे, एंड एंटायर सिलेबस ऑफ जीके जो आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगता है फॉर सैनिक स्कूल और एज वेल एज फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, दिस वी विल बी कवरिंग अप entirely in this session. Okay, so let's get started with the today's session without any further delay. Yes, Ustad and Mukesh, hello. So let's get started without any delay. Let us get started. So basically जब हम जीके के लिए बात करते हैं, okay, what's your name? Good. Okay. So when we talk about GK, so whether you're preparing for RMS, whether you're preparing for Sainik School, one thing you have to keep in mind that is जब हम GK के बारे में बात करेंगे, so it will include three parts. One of the part is like pure GK that is there, that will like whatever is going on associated with sports, associated with historical monuments, all the things that could be like pure GK that you will be asked. Additionally, then we have got another part that you will have that is general science. So some questions might be there from the science portions. In the Sainik School and Rashtriya Military School, science का भी जो portion है, they have given you up in the GK only. And कुछ portion of current affairs that is asked in RMS. वो भी आपको GK में ही आता है. So, hello Priyanshi. Okay, my voice is echoing. Let me check. Why is this happening? Let me check. Just give me a moment. Okay, now is it okay? Now the voice is clear? I think it is. Yes, now it's better. Okay. Yes, Priyanshi. Okay, so let us get started with the today's session. Basically, the topic that we are going to discuss and start with is the topic of your science. Science background से हम जीके में start करेंगे. And the topic we have got everyone is plants. So why I actually selected with the topic of plants? इसके लिए we have a very genuine and fair reason. इस बार आपका जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन था, in that question one topic came directly from this chapter. And the question was like very easy. You could have done it very easily. What was needed is like a total schematic preparation that was required. Okay. So one by one, we will be starting with plants, parts, and its function. So basically, what we have to discuss about in this chapter में हम discuss करने वाले हैं about plants, the parts of plants and the structure of particular plants. So basically, when we start, so आप कभी भी देखोगे आपके surrounding में there are many plants. You are just surrounded by the plants. Some plants might be like smaller than you. Some plants might be taller than you. Some plants are of your height. Some plants like old mango tree, people tree, banyan tree, they are the very huge plants. Okay, so now हाउ टू डिफरेंशिएट द प्लांट्स, हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्लांट ट्री है, कौन सा प्लांट हर्ब है, कौन सा प्लांट श्रब है. सो फॉर दिस, सो बेसिकली इन सभी प्लांट्स को हमने क्या किया है, वी हैव क्लासिफाइड ऑल दीज प्लांट्स इनटू 5 टाइप्स. हमने सभी प्लांट्स को क्या किया, वी हैव क्लासिफाइड ऑल दीज प्लांट्स इनटू यू कैन से 5 बेसिक टाइप्स जो हमारे सिलेबस के लेवल में राइट नाउ वी हैव. The first one we have is hops. Okay, the first kind of plant that we have got is hops. The second one we have is shrubs.
The third one you have is trees. Okay. Likewise, the fourth we have is climbers. And the fifth one जो हमारे पास है, that is creepers. Now, यहाँ पे what becomes important is to understand the difference between these five types of plants. Okay, so herbs, shrubs, trees, climbers, and creepers. One by one, about each one of them we are going to discuss. तो सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विथ herbs. जब हम बात करते हैं herbs की, so basically you should know what are herbs. जब हम herbs के बारे में बात करते हैं, so what are herbs? तो अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो ऐसे कोई भी प्लांट जो बहुत ही टाइनी है, बहुत ही स्मॉल है, जिनका स्टेम ग्रीन कलर का है, ओके, दे हैव अ ग्रीन स्टेम, और जो स्टेम होता है वो बहुत थिक नहीं होता है. इफ यू लाइक ट्राई टू बेंड इट, तो वो बहुत इजीली बेंड हो जाएगा. Generally, these are the characteristics of herbs, and we call all such plants as herbs. So what can we say? We can say that plants, okay, we can define them as plants with green and tender stem. Just that's it. Okay, इतना ही हमको याद रखना है. The plants that have green and tender stem. Tender means weak, or you can say soft. Okay, so tender means weak or soft. So all such plants that have weak or soft stem, all such plants are categorized under herbs. So ये हम याद रखेंगे. Likewise, we have got the second one. Second one हमने herbs के बाद क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया about shrubs. So shrubs are like a more advanced one. Okay, shrubs are like the most advanced. So herbs में क्या था? प्लांट का जो स्टेम था, that was green and tender. बहुत easily वो ब्रेक हो रहा था, बहुत easily वो बेंड हो रहा था. Now when we talk about shrubs, तो shrubs में क्या हो रहा है? Shrubs में these plants have green, hard stem, but not thick stem. Okay, but stem is not thick. So basically, what is happening here? Herbs में क्या हुआ हमारे साथ? प्लांट्स का स्टेम ग्रीन था और बहुत ही टेंडर था. श्रब्स में क्या हो गया यही स्टेम? इन केस ऑफ श्रब्स, प्लांट का जो स्टेम था ग्रीन तो है, बट दैट समवट बिकेम हार्ड. ओके, अब हम उतना इजीली उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं. एंड लाइकवाइज जो स्टेम है वो थिक नहीं है. It's not much thick, it's just hard. And they have branches. What do they have? They have branches. We can say branches are present. So सबसे पहले we had herbs. After herbs we discussed shrubs, that are the plants with green hard stem, and the stem is not much thick, and then they have branches as well. Third kind of plants that we see in our surrounding are trees. Okay, so what is the characteristic feature of trees? Most of the plants that we see, ये हमारे trees ही होते हैं. जितने plants आप देखोगे, most of your plants that we have are trees only. Okay, so what exactly are trees? Okay, now you just have a look at voice and just let me know. Okay, now just check the voice. I think now the echo must be better. आप एक बार देखिए and let me know. Next are trees. What are trees? Trees are again plants with thick, hard and tall stem. Okay, trees are what? Trees are the plants with thick, hard and tall stem. तो आपको यही याद रखना है. That what is happening in the case of plant trees? Trees में जो आपका stem है वो बहुत ही thick है. Like look at a mango tree, look at a banyan tree. Okay, it is very hard, it's very thick. Okay, this you have to keep in mind. So in this case, what is happening? The Plant is okay with hard, thick and tall stem. We will call it as trees. You'll keep in mind like banyan tree, peepal tree. सब में आप याद रखोगे. And what happens here? In this case, branches arises. What is happening here?
Branches arises from upper part of stem. Okay, now what happening in the trees? Branches arises from upper part of stem. This much we have to keep in mind about trees. So trees ka characteristic feature is this only, that plants have a very thick hard stem and the branches are present on the upper region of the stem. After this, we will keep in mind, we will discuss about creepers and climbers. So creepers and climbers ke liye we will discuss it together. Okay, so we have got creepers. What are creepers? So how many of you have seen those plants that have a very weak stem? Okay, they are like very weak stem and they grow close to soil or close to surface. So we can simply say plants with weak stems. Okay, plants with weak stems that grow close to soil. Okay, all the plants with weak stem that grow really close to soil और वो क्या करते हैं, उनका स्टेम जो होता है वो इतना वीक होता है that it's unable to stand upright. तो जो plants होंगे वो बिल्कुल soil के close association में grow करते हैं. That is creeper. तो creeper में what you have to keep in mind? Weak stem is there. What is there in creeper? In creeper there is weak stem. This you have to keep in mind, that weak stem is there in creeper. Now, what are the examples we have of creepers? The examples you have to keep in mind. This is where the question comes from. Okay, the examples of creeper you will keep in mind, like watermelon. Okay, pumpkin. These are all the examples of your creepers. Okay, muskmelon also. Correct. Hello, Vaishnavi. And correctly said, Ustad. So I tried it. Okay, बेटा, but it's not working. So I'll after the class I'll have a look कि echo का trouble क्यों आ रहा है प्रियांशी. So for today I'll apologize, but I'll check it that why it was happening. Okay. So watermelon, pumpkin, muskmelon. These are all examples of creeper. And another kind of plants हम study करते हैं, that is called as climbers. So creepers and climbers, they have a very common feature. Common feature क्या है? The common feature is that stem is weak in both of them. Okay, stem is weak in both of them. So climbers का भी stem just like creeper क्या होगा? Climbers का stem भी weak होगा. But the difference is that climbers take support. Okay, what do? They take support. Support of what? Support of anything. Support of a wall, support of a thread, support of a pillar. They can take support of anything. Okay, and they climb up. Okay, and climb up. So multiple times you would have seen कि कई plants होते हैं उनका stem तो बहुत weak है, but वो wall का support लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो pole का support लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, like all of that. Okay, so they take support and they climb up. The examples आप इस case में याद रखोगे. What are the examples? Correctly said Ustad. Money plant. Okay, the very commonly seen money plant. अगर आप घरों पे भी देखोगे, at your homes if you have a money plant, तो हिंदी में हम इसको कहते हैं बेल. तो क्या होता है? जो मनी प्लांट का वाइन होता है, बेल होता है, that takes the support of wall, even it takes the support of thread, and using that support it climbs up and like grows at very tall heights. So we'll keep in mind money plant. In addition to money plant, grapevine. Okay, grapevine also you will keep in mind. So plants हमने study किए, they can be of 5 types: herbs, shrubs, trees, climbers, creepers. Herbs कौन से plants थे? ऐसे plants जिनका stem green था and it was very tender, soft and weak. Then we discussed about shrub. Shrubs हमारे ऐसे plants थे जिनका जो stem था that was green, but this time it is a little hard. It's not thick, but it's hard and it's not easily breakable. And in case of shrub, branches were present. Then हमने discuss किया about the trees. So what were trees? Trees are the plants with thick, hard and tall stem. और इनके जो branches थे, the branches arises from the upper part of the stem. Then main difference आपको याद रखना है creepers and climbers. In both creepers and climbers, what is there? The stem is weak, but creepers में stem इतना weak है that they are even unable to climb up, तो वो soil के साथ ही grow कर जाते हैं, like watermelon, pumpkin, muskmelon. And in case of climbers,
The stem is weak, but what the plants do, they take the support and climb up. So climbing up, from there comes the name climber. An example क्या होंगे? Money plant and grapevine. So if you will have a look over here, have a look. This is a watermelon plant. Okay. If you will see, this is a watermelon plant, and this is also a creeper. Okay, and these two that you are seeing, these two also have weak stem. They have taken the support of either a wall, either a pole or railing, anything. So these two are climbers. They are very commonly seen plants. So ये आपने देखे ही होंगे, I assume, on your surroundings and very easily. Okay, you have very easily distinguished them between the creepers and climbers. So this was about the creepers and climbers. And यहाँ पे भी आप further difference देख पा रहे हो. This is climber. Climber ने क्या किया? Climber ने support लिया and the climber climbed up. Creeper ने क्या किया? Creeper could not take the support, तो वो soil के surface पे grow कर रहा है. Okay. So next we have to discuss about the parts of plant, the most important part of this chapter or this topic, that is the parts of plant. तो यहाँ पे आप देख सकते हो in my surrounding we have the picture of plant, okay, and there are several different parts shown. So we will just start with labeling it. तो सबसे पहले आप देखोगे कोई भी plant आप देखोगे अपने surrounding में at your home. So plant का जो कुछ portion होता है that is present above the soil. Some portion of the plant is present above the soil and some part of this plant is present below the soil. तो यहाँ पे हम two terms learn करेंगे. First term is shoot system. What is the first term? First term is shoot system and another term is root system. तो very common basis पे एक layman's view से अगर हमको shoot system और root system को define करना है, so we will say the part of plant that is present where? That is present above the surface of soil. Okay, the part of plant that is present above the surface of soil is called as shoot system. So you can just say it. What is shoot system? Shoot system is part of plant present above the surface of soil. Okay, part of plant present above soil surface. What is that? The part of plant that is present above soil surface is called shoot system. And next we have is the root system. The root system क्या होगा? Root system is part of plant present below the soil surface. Okay, part of plant present below soil surface. That is root system. Okay, the part of plant that is present below soil surface. तो बहुत ही सिंपल है ये, तो इसमें हमको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रिक्वायर्ड है. बस इतना ही हमको याद रखना है कि सॉइल के ऊपर जो प्रेजेंट है वो क्या है? वो शूट सिस्टम है. और सॉइल के नीचे जो प्रेजेंट है वो क्या है? दैट इज रूट सिस्टम. ओके, हेलो बेटा, रिगार्डिंग द मार्क्स कट ऑफ कोई भी क्वेरी है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करो. दैट वुड बी द बेस्ट प्लेस टू कम्युनिकेट. ओके, तो आप जितना भी डिटेल्स है अपना एसोसिएटेड विद द स्कूल कैटेगरी जस्ट सेंड इट ऑन द नंबर 8305103991. ओके, yes. So first we had root system and then we had the shoot system. Part of plant present above the soil surface, shoot system. Part of plant present below the root system is called as root system. अब यहाँ पे आप देख सकते हो there is this yellow color thing present. What are they? They are flowers. The yellow color thing that is present over here, what are they called? They are called as flowers. Then यहाँ पे आप देख पा रहे हो the green color tiny structure that are like the identical feature of a plant. हम plant को कैसे identify करते हैं? From a very far away you are looking at a thing and you say that it's a plant. How you got to know? आपने leaves देखे ना, you saw that green colored structure. So these are leaves only. So due to the leaves we identify the plant very easily. So flowers, the yellow color part is there. Then this is leaves. Then this is what? This is a fruit. What is this? This is a fruit, red color structure. Okay, we are guessing it's tomato, so it's a fruit. And then this structure, this is called as stem. And below here you have root.
So ideally, how many structures are present in a plant, or how many parts of plant are there? There are five parts of plant. फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट, स्टेम एंड रूट. आपको याद रखना है कितने पार्ट है प्लांट के आइडियली इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइव प्लांट्स है हमारे पास. रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड वी हैव गॉट फ्रूट. तो इतने फाइव पार्ट्स जो है प्लांट के आप याद रखोगे. एंड वन बाय वन अब हम एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट टू स्टडी अबाउट वन बाय वन about each part of the plant. So what we are going to start with? We are going to start with stem. Okay? What are we going to start with? We are going to start the discussion with the stem. Yes. तो stem से जब हम discussion start करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देखो. How do we define the stem? So stem के लिए आप याद रखोगे, the stem is a part of plant. What is stem? You will keep in mind, stem is a part of plant that bears flowers, leaves, branches, fruits, all of them. So what is a stem? Stem is a part of plant that is responsible for bearing flowers, leaves, branches or fruit. तो यहाँ पे भी आप देखो, there is a fruit present, there are flowers present, there are branches present, there are leaves present, and where are all they present? They are present on this stem. So how can we define stem? We can define the stem as a part of plant that bear leaves, flowers, and branches, birds, all of them. Okay? इसके बाद most important thing यहाँ पे आती है, that is the discussion about the two parts of the plant. Okay? इनको हम कहते हैं nodes and internodes. So we will discuss about, like you first look at the picture, that will help you to understand it better. तो हमको क्या स्टडी करना है? हमको स्टडी करना है अबाउट नोड्स एंड इंटरनोड्स. तो कभी भी आप कोई प्लांट देखोगे तो उस प्लांट के स्टेम में सब जगह लीव्स या ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होते. एट सम प्लेसेस ब्रांचेस एंड लीव्स आर प्रेजेंट, एट सम प्लेसेस ब्रांचेस एंड लीव्स आर नॉट प्रेजेंट. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, नाउ दिस इज अ स्टेम. ओके, यहाँ पर कोई लीव प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई लीव प्रेजेंट नहीं है. वेयर इज द लीव प्रेजेंट? अ लीफ इज प्रेजेंट इन this region. A leaf is present in this region. तो स्टेम का कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे लीफ और ब्रांचेस प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नोड. So how can we define the node? We can say node is a part of stem from where leaves or branches originate. A part of stem from where leaves or branches originate. कभी भी किसी भी स्टेम को देखना, क्लास के बाद आज फर्स्ट थिंग हमको यही करना है, just go out of your house. घर में कोई भी प्लांट लगा होगा उसको देखेगा, पूरी जगह पे आपके ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं, कुछ कुछ पोर्शन में ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं. तो पार्ट ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर ब्रांचेस अराइज, दैट इज कॉल्ड एज नोड. उसको हम क्या कह रहे हैं? नोड. तो ये हो गया हमारा नोड, ये भी हो गया हमारा नोड. अब इन दो नोड्स के बीच में आप स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी लीव अराइज नहीं हो रही है, यहाँ से कोई फ्लावर अराइज नहीं हो रहा है, कोई ब्रांच अराइज नहीं हो रही है. इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनोड. व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज इंटरनोड. तो हमने अभी डिस्कस किया नोड्स और इंटरनोड्स के बारे में. नोड क्या होता है? नोड होता है द पार्ट ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर ब्रांचेस अराइज, एंड इंटरनोड इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स. तो यही अब हमको नोट डाउन करना है. यू जस्ट राइट डाउन what is node. Node is region of stem. Okay, region of stem from where branches arise. Okay, at the region of stem from where branches arise, what do we call this region? This region is called as node. And the next term we have is internode. What is the next term we have got? The next term is internode. Internode क्या होगा? Internode is the region between two nodes. What is internode? Internode is the region between two nodes. इतना हमको याद रखना. अगर किसी ने पूछा कि प्लांट में स्टेम में लीव्स कहाँ से आ रहे हैं, तो लीव्स विल ऑलवेज कम फ्रॉम नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो रीजन होगा उसको हम क्या कहेंगे?
उसको हम कहने वाले हैं इंटरनोड। तो ये दो चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। with विद help हेल्प of ऑफ this दिस picture पिक्चर it इट is इज very वेरी clearly क्लियरली understood. अंडरस्टूड। The द next नेक्स्ट point पॉइंट is इज associated associated with with function function of of stem. stem. Okay, the Okay, the next next point point is is associated associated with with function function of of stem. The stem. तो stem का stem का function क्या function क्या होगा? होगा एक एक प्लांट प्लांट में में? what what can be the can be the function of function of stem? stem? तो तो stem का stem का mainly mainly हम जो हम जो function function study study करते करते हैं, हैं, the the first first function function is is that that it it helps helps in in ट्रांसपोर्ट और और कंडक्शन. conduction. ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट transport और और कंडक्शन conduction ऑफ of water water and and minerals minerals from from soil. soil. What it What it helps in? helps in? It It helps in helps in transport or transport or conduction conduction of of water water and and minerals. तो मिनरल्स। तो जितने जितने भी भी वाटर एंड वाटर एंड मिनरल्स मिनरल्स कौन कौन एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करा है? करा है? वाटर एंड वाटर एंड मिनरल्स हम मिनरल्स हम फर्दर फर्दर स्टडी स्टडी करेंगे करेंगे। दैट एक दैट एक प्लांट प्लांट में में वाटर एंड वाटर एंड मिनरल मिनरल एब्जॉर्प्शन का एब्जॉर्प्शन वर्क का वर्क होता है होता है रूट का. रूट का। तो तो रूट ने रूट क्या ने क्या किया? किया? रूट ने रूट ने वाटर को वाटर को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब किया. किया। लेट लेट अस अस अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड विद विद दिस दिस डायग्राम. डायग्राम। यहाँ यहाँ हमारी हमारी रूट रूट थी. थी। रूट रूट ने ने बहुत बहुत सारा सारा वाटर वाटर एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, बहुत बहुत सारे सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिनरल्स एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब किए. किए। अब जो अब जो वाटर वाटर मिनरल्स मिनरल्स रूट ने रूट ने एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब किया किया वो वो तो तो उस उस लीफ लीफ को भी को भी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड था. था। तो तो लीफ लीफ तक ये तक ये वाटर वाटर और और मिनरल्स मिनरल्स कौन कौन लेके लेके जाएगा? जाएगा? स्टेम इज स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन एंड कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट transport ऑफ of these these water and water and minerals till minerals the till leaf. the leaf. So it So is it the is the function of function of stem stem to to conduct conduct water water and and minerals, to minerals, to transport transport water water and and minerals minerals from roots towards the leaf and other parts of the of the plant. plant. Okay, Okay, this we this have we to have to keep in keep in mind. mind. Likewise, Likewise, what what helps? helps? What is the What is the main main function of function of stem? stem? That That stem stem provides provides support. support. Okay, Okay, it also it provides, it also also serves the serves the function function of of support. support. Support to Support to whom? It whom? It provides the provides the function of function of support to support to plants. plants. This This much much we we will will keep in keep mind. in These mind. are These the are the two main two main functions of functions stem. of STEM. एक एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन जो आपको आपको यहाँ यहाँ से से पूछा जा पूछा जा सकता सकता है. है, दैट that क्वेश्चन question इज is बेसिकली basically what is what the is the move direction direction of of movement movement of of water water in in stem. STEM? ओके, Okay, क्या क्या आपको आपको याद याद रखना है? रखना है? व्हाट इज What द is the डायरेक्शन direction ऑफ of मूवमेंट ऑफ movement of वाटर water इन in स्टेम? STEM? ये ये आपको आपको याद याद रखना है. रखना है, यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आ क्वेश्चन आ सकता है. सकता है। तो हम तो हम याद याद रखेंगे रखेंगे दैट that वाटर water ऑलवेज always मूव्स moves इन in अपवर्ड upward. डायरेक्शन इन स्टेम. ओके, इन स्टेम water Water moves moves in in upward upward direction. direction. Now Now upward upward direction क्या direction क्या है है? ये भी ये हम भी हम स्टडी स्टडी करेंगे. करते हैं। In In stem, STEM, water water moves in moves which in which direction? In direction? In stem, STEM, water water moves moves in in upward upward direction. direction. Okay, Okay, so so let us let us understand this understand this point that point I that have I have written, that written, in that in stem, STEM, water water moves moves in in upward अपवर्ड direction. तो डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब जब आप आप एक स्टेम को स्टेम को देख रहे देख हो, रहे हो, वाटर वाटर यहाँ से यहाँ से स्टेम ने स्टेम ने एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब किया किया और अब और वो अब वो कहाँ पे कहाँ जा पे रहा जा रहा है? है? दैट्स दैट्स गोइंग गोइंग टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द लीव्स. लीव्स। लीव्स लीव्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट है? है? लीव्स आर लीव्स आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट द इन द अपर अपर पार्ट ऑफ पार्ट द ऑफ द स्टेम. स्टेम। तो सो वाटर वाटर हमेशा हमेशा लीव में लीव में कहाँ कहाँ जाएगा? जाएगा? वाटर वाटर ऑलवेज एंड ऑलवेज will विल go गो इन in द the upper upper part. part. Okay, Okay, it it will always and always always will will go go on in the the upper upper part in part the in the stem. So stem. So these these were the were the main main functions of functions of the stem stem that we that have we to have to keep in keep in mind. mind. Okay, Okay. now Now everyone, everyone, the stem में stem में next part next हम part हम study study करते करते हैं. हैं That is associated with the modifications of the stem कि कैसे stem स्टेम modify मॉडिफाई होता है, होता है, किस 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 function के फंक्शन लिए के लिए stem स्टेम modify मॉडिफाई होता होता है, है, ये ये हमको हमको study स्टडी करना है. करना है। तो वेरी वेरी क्विकली हम क्विकली हम इसको भी इसको भी स्टडी स्टडी करेंगे. करेंगे। ठीक है, ठीक है, we वी will विल discuss डिस्कस about अबाउट stem स्टेम modifications. मॉडिफिकेशंस। There we There we have it. have. Okay, so Okay, so basically basically the the main main function we function we have a have a stem stem modification modification is is that that ideally तो ideally तो हमने हमने stem stem के के two two functions functions study स्टडी किए किए, that वो that वो water water mineral mineral transport में ट्रांसपोर्ट help में कर हेल्प रहा कर है, रहा है, it it is helps to providing provide the support to support the to the plant. plant. But But additionally additionally sometimes in sometimes in some some plant what plants what happens, happens? stem is Stem is modified modified to to store store
food. Okay, Okay, stem stem in in some some plants is plants is modified modified to to store store food. तो तो हमारे हमारे leaves लीव्स बहुत बहुत सारा सारा फूड फूड सिंथेसाइज सिंथेसाइज कर कर रहे रहे हैं हैं and and for for the the rigorous rigorous conditions conditions for the for the survival survival purpose purpose stem stem sometimes sometimes perform perform for for the the storage storage of of food. food तो तो यहाँ पे यहाँ आप पे देख आप देख सकते हो सकते हो what is what is this 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 you this can you can see see is a is a potato. potato Okay, okay what is what this is a ginger जिसको हम कहते हैं कहते हैं अदरक. अदरक What is what is this 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 is this is called called as as colocasia. colocasia Okay, okay so you so will you will keep in keep in mind mind that that stem. stem Okay, okay तो तो आप आप तीनों में तीनों में एक एक चीज चीज कॉमन कॉमन देखोगे देखोगे दैट दैट potato potato ginger ginger colocasia colocasia all the all the three three of of them are them are present present under the under the soil. तो soil ये तो ये क्या है क्या है क्या ये क्या ये roots है रूट्स the है द answer is आंसर इज no. नो
potato, potato, ginger, ginger, and colocasia. colocasia. Additionally, Additionally, turmeric. turmeric. These These are are stem. They stem. are They are not not roots. roots. These These are are underground underground stem. तो stem. तो आपको आपको क्या क्या याद याद रखना है? रखना You है? have You to have to keep in keep in mind mind that that underground underground stem stem of of what? what? Underground Underground stem stem of of potato. potato. Examples are Examples very are very important. important. Examples Examples should be should on be the on tip the of tip your of your tongue. tongue. Underground Underground stem of stem of potato, potato, ginger, ginger, colocasia. colocasia. Okay. Okay. Underground stem of potato, ginger, colocasia. Yeah. What do What they do do? they do? Store Store food in food them. in them. Okay. Okay. Store Store food in food in them. तो them. तो simply simpली क्वेश्चन आ क्वेश्चन आ सकता है सकता है पोटैटो potato किसका किसका मॉडिफिकेशन है. modification है. So So you you will will keep in keep in mind that mind that potato potato is a is a modification modification of of what? what? Potato is a Potato is a modification of modification stem. of stem. Potato is Potato is not a not root. a root. Potato is a Potato is a stem. stem. Ginger is Ginger is not a not root. a root. Ginger is Ginger a is a stem. And stem. And colocasia colocasia is is not not a a root. root. Colocasia is Colocasia a is a stem. So stem. So underground stem underground of stem of potato, potato, ginger, ginger, colocasia colocasia are are modified modified stem stem to to store the store the food. food. Yes, Yes, Ustad. Ustad. We will We will also also discuss discuss about about cactus. cactus. Okay. Okay. Likewise, we Likewise, we study study about about cactus. cactus. What is What is cactus? cactus? Cactus हम Cactus हम सभी ने सभी ने देखा है. देखा है. Cactus is Cactus a is a desert desert plant. plant. Okay. Okay. Cactus is Cactus a is a desert desert plant. So plant. So what what happens in happens in case of case of cactus? cactus? ये हम ये हम study स्टडी करेंगे. करेंगे. आप आप याद याद रखोगे रखोगे इसको. इसको. This is This is there is also stem modification present. Now ये stem स्टेम modification मॉडिफिकेशन कैसे कैसे present है प्रेजेंट है, ये हम ये हम study स्टडी करेंगे करेंगे जब हम जब हम लीफ के लीफ के बारे में बारे में स्टडी स्टडी करते कर हैं. लेते हैं. Only ओनली then देन you वी will विल get गेट to टू know नो it. इट. आज की आज की क्लास में क्लास में आपको आपको यहीं तक यहीं याद तक याद रखना है. रखना एक है. बार एक बार वेरी वेरी क्विकली क्विकली हम हम रिवाइज रिवाइज करेंगे. करेंगे. हमने क्या हमने क्या स्टडी स्टडी किया? किया. हमने स्टडी किया हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट्स हैं वो 5 टाइप के हैं. दे दे कैन कैन ईदर ईदर बी बी हर्ब, हर्ब, श्रब, ट्रीज, ट्रीज, क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स और और क्रीपर्स. क्रीपर्स. हर्ब्स जो हर्ब्स होते जो हैं होते हैं इनका इनका स्टेम स्टेम ग्रीन और ग्रीन और वीक वीक होता है. होता है. श्रब्स जो श्रब्स होते जो हैं होते हैं इनका इनका स्टेम स्टेम ग्रीन ग्रीन होता है. होता दैट है. इज दैट इज हार्ड हार्ड एंड एंड थिक थिक एंड इट्स and it's नॉट not easily easily breakable. breakable. Okay, Okay, sorry, it's sorry, it's not not thick. thick. It's It's hard hard and and green and green not and not easily easily breakable. breakable. After that After we that, we discuss discuss about about trees. trees. Trees जो Trees जो हमारे हमारे होते होते हैं they हैं, have they have thick, thick, hard and hard and very very tall tall stem, stem, and and branches branches generally generally are are present at present the at a very very top or top upper or part upper of the part of the stem. stem. Then we Then we discussed discussed about about creepers and creepers and climbers. climbers. Both Both creepers and creepers and climbers have climbers have weak weak stem, stem, but but climbers can climbers can take the take the support and support and climb up. climb From up. there From comes there the comes name the name climber. climber. And the And the examples we examples we have have are money plant and grapevine. Creepers are also also having weak having weak stems, so stems. they So they grow in very very close close knit knit association with association the with the soil. soil. And for And for example, we example, have we have watermelon, watermelon, pumpkin, pumpkin, and and muskmelon. Then muskmelon. we Then we discussed discussed about about parts of parts of plants. We plants. got We to got know to know that shoot that shoot system, system, part part of of plant plant present present above the above the soil, root soil, root system, system, part of part of plant present plant present below the below the soil. soil. एक एक प्लांट के प्लांट के 5 फाइव पार्ट्स होते पार्ट्स हैं. होते हैं. फ्लावर, फ्लावर, लीफ, लीफ, फ्रूट, फ्रूट, स्टेम स्टेम एंड एंड रूट. रूट. इसके इसके साथ ही साथ हमने ही हमने स्टेम के स्टेम बारे के में बारे में स्टडी स्टडी किया. किया. वी We डिस्कस दैट discussed that स्टेम stem मेनली क्या mainly क्या करता है. करता है. स्टेम Stem बियर्स bears फ्लावर्स, लीव्स, flowers, leaf, ब्रांचेस एंड branches, and फ्रूट्स. fruits. स्टेम की Stem के फंक्शन क्या function है? क्या है? इट It हेल्प्स इन helps in ट्रांसपोर्ट transport, कंडक्शन ऑफ conduction of वाटर water and मिनरल्स फ्रॉम minerals द from the सॉइल. soil. वो वो प्लांट को प्लांट को सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड प्रोवाइड करता है. करता एंड है. व्हाट एंड इज द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर वाटर मूवमेंट. द मूवमेंट? द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर वाटर मूवमेंट मूवमेंट इज इज अपवर्ड. अपवर्ड. देन देन हमने हमने नोड्स नोड्स इंटरनोड्स के इंटरनोड्स के बारे में बारे में देखा. देखा. स्टेम का स्टेम का ऐसा ऐसा रीजन रीजन जहाँ से जहाँ से ब्रांचेस ब्रांचेस अराइज अराइज होते होते हैं, हैं, दैट इज दैट इज कॉल्ड कॉल्ड एज इज नोड. नोड. एंड द And the रीजन region बिटवीन between टू two सक्सेसिव successive नोड्स इज nodes is कॉल्ड called एज as internodes. internodes. Then we Then we discussed that discussed that underground underground stem of stem of potato, potato, ginger, and ginger. colocasia is modified to store food. So now Now, everyone, we will everyone, be we will be summing up summing our up our today's today's session at session this at this point. point. Okay. Okay, Next next class class will be will be Ashutosh Ashutosh tomorrow once tomorrow again once at again at 8:15 8:15 p.m. p.m. I'll I'll just just schedule schedule it it right right now. now. तो तो कल आप कल आप कनेक्ट कर कनेक्ट हो सकते हो सकते एट हो द एट द सेम सेम टाइमिंग एट टाइमिंग द एट द सेम सेम प्लेस प्लेस नॉवल नॉवल वेल वेल यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल 8:15 8:15 p.m. पीएम पे पे. हमारी हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास क्लास होगी. होगी. कल हम कल लोग हम लोग स्टडी स्टडी करेंगे करेंगे अबाउट अबाउट लीफ. लीफ. लीव्स और लीफ और रूट हम रूट लोग हम कल लोग कल पूरा पूरा स्टडी स्टडी करेंगे. करेंगे. तो तो पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट्स की प्लांट्स जो की जो मेन मेन
मेन दो 3 पार्ट्स थे ये हमारे, ये हमारे हमारे सारे सारे कंप्लीट हो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक जाएंगे, है? ठीक है? सो So नाउ वी now विल we बी will be समिंग अप summing द up the सेशन session बिफोर before summing summing up up the the class. class. All of you, thank you for getting connected. All the best for your preparation. और ये जो भी हमने पढ़ा है इसका PDF आप एक्सेस कर सकते हो from the Telegram channel of Knowell Bell. लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, वहां से आप इसका PDF ले लेना. Make your notes and start studying rigorously and preparing well. Bye everyone. Good night.